अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड आ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 एंड 12। सो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, हमें दो गिवन है। सो हम करेंगे लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। सपोज कर लेंगे कि जो एक्स है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है। देन हम क्या करेंगे कि 6:12 प्रोपोर्शन 12:x, इसको प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। दो हमारे पास जो सेकंड नंबर है उसको हम दो दफ़ा लिखेंगे, उसको रिपीट करेंगे, उसको बहुत मीन पोजीशन पे लिखेंगे। एंड जो फोर्थ प्रोपोर्शन है उसको हम एज एक्स ले लेंगे। देन हमें पता है जो जब हम प्रोपोर्शन लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो मीन्स है हमारे पास 12 into 12 और एक्सट्रीम पे हमारे पास 6 into x। सो 12 into 12 144 एंड 6 into x 6x एंड x फाइंड करना है तो 6 जाके डिवाइड हो जाएगा। सो वी गेट x इज इक्वल टू 24। सो थर्ड प्रोपोर्शनल इज 24। Second part is a cube 3a square. Again, let x be the third proportional, and then a cube ratio 3a square proportion 3a square ratio x. Again, product of means is equal to product of extremes. So 3a square into 3a square is equal to a cube into x, and x is equal to 9a for our a cube. So x is equal to 9a. Got it? Third part है a square minus b square and a minus b. Again, let x be the third proportional. A square minus b square ratio a minus b proportion a minus b ratio x. Again, product of means is equal to product of extremes. So a minus b into a minus b whole square is equal to a square minus b square into x. And x is equal to a minus b whole square over a square minus b square. So we know that a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. So this a minus b and a minus b cut off. So we are left with a minus b over a plus b, which is equal to x. So fourth part is x minus y square x cube and x cube minus y cube. Let x be the third proportion. So x minus y square is ratio x cube minus y cube proportion x cube minus y cube ratio a. Again, product of means is equal to product of extremes. So we get x cube minus y cube whole square is equal to x minus y square into a. So a is equal to x cube minus y cube square over x minus y square. So x cube minus y cube is equal to x minus y into x square plus xy plus y square का whole square over x minus y square is equal to a. So this x minus y and x minus y cut off, we are left with a is equal to x square plus xy plus y square का whole square. Part 5 is x plus y whole square and x square minus xy minus 2y square. Let a be the third proportion because x and y variables are given in the question. So assuming we assume a different variable like a. So x plus y whole square ratio x square minus xy minus 2y whole square proportion x square minus xy minus 2y square ratio a. Again, product of means is equal to product of extremes. We are left with x square minus xy minus 2y whole 2y square का whole square is equal to x plus y whole square a. And a is equal to x square minus xy minus 2y का square whole square or x plus y का square. We simplify this and cut off. We are left with a is equal to x minus 2y का whole square. Part 6 is p square minus q square over p cube plus q cube and p minus q over p square minus p cube plus q square. Let x be the third proportion. Then p square minus q square over p cube plus q cube ratio p minus q over this proportion p minus q over p square minus p cube plus q square ratio x. Again, product of means is equal to product of extremes. So we get p minus q over p square minus p cube plus q square का whole square is equal to p square minus q square over p cube plus q cube into x. And we know that p square minus q square is equal to p minus q into p plus q, and pq plus q cube is equal to p plus q into p cube minus p cube plus q square. So this cut off minus
p plus q cut off, and by rearranging we are left with x is equal to p minus q over p square minus p q plus q square. सो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है हमारा कंप्लीट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।